अस्सलामुअलैकुम मैडम तेरा। हाँ, घर आए मेहमान पे दरवाजे बंद नहीं करते। ओ अब्बा शीदा, तू भी यहाँ पे? अब बड़े मेहती इकट्ठे किए हैं मैडम तारा ने, क्या बात है। चल चल। ओ हट। Farhat Ishtiaq, the sorceress of storytelling, spins tales that tug at your heartstrings and leave you craving for more. Out of all the classics, Yakeen Ka Safar, a literary triumph by Farhat Ishtiaq, produced into an iconic drama, captivating hearts globally. Its compelling storyline and memorable characters have etched it as a timeless masterpiece in the world of televised storytelling. अभी अगर इंसान से कोई गलती हो जाए और उस गलती के एहसास होने पर हम अल्लाह ताला से माफी मांगे तो वो माफ कर देता है ना। लेकिन इंसान माफ नहीं करता। इंसान माफ नहीं करता। वो बार हमारी गलतियां, हमारे गुनाह हमारे सामने लाता है। Moving further, Udari by Farhat Ishtiaq soared to unparalleled success, transcending conventional narratives. This riveting story dared to challenge societal taboos, addressing crucial issues with finesse. Its poignant portrayal of resilience and justice resonated deeply, earning Udari acclaim for its thought-provoking themes and powerful storytelling, solidifying Farhat Ishtiaq's status as a literary luminary. तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए हम यहाँ पे आए थे। चैन से जी लेने दे हमें यहाँ पे। जा कहीं और जाके मार। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अब क्या लेने आया है इधर? बदला लेने आया हूँ अपना, इंतकाम लेने। How can one forget Arydigital, Farhat Ishtiaq's masterpiece, which intricately weaves family dynamics with love. This timeless serial explores relationships, loyalty, and the complexities of the heart, creating a captivating narrative that endures. आगाजान, मैं अर्जुमन से मंगनी तोड़ना चाहता हूँ। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ मैं शादी भी। But the greatest hit of all time is Farhat's Safar, a literary masterpiece, portraying the poignant journey of Karat and Ashar. This enduring tale of love and sacrifice, etched with emotional depth, has cemented its place as a timeless classic, captivating readers with its evocative narrative. खालम, मैं रात को इसलिए आई थी क्योंकि मुझे घर से बाहर रात को ही निकाला गया। किसने निकाला था तुम्हें घर से बाहर? वो आलीशान महल था ना, जहां अम्मी मुझे 1 साल पहले छोड़ के गई थी। Farhat Ishtiaq, the maestro of emotions and storytelling, continues to weave literary magic. Dive into her world of timeless tales that linger in your heart forever and find the path to conquer your world of dreams.